Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Mrs. Sobia Yaz and I hope everything is good at your side. Students, we have talked about the first and the second level of industry, that is primary and secondary industry, in great detail, and our today's lecture is about tertiary or service industry and especially transport. So you would have the knowledge of the methods of bulk transport for the majority of industrial products and know the advantages of seaborne industrial transport. Students, seaborne mean carried in a ship by sea. Tertiary industry, as you know, is the third level of industry and it is also known as service industry. Students, this industry does not produce goods for sale but provides services to the general population and to businesses. It enables the two other levels of industry, primary industry and secondary industry, function effectively. Students, service industry provides facilities and allow a society to run smoothly, as there are so many service workers who help to make life better for all of the people. If there are no service workers, our life would be very difficult, as a lot of persons are directly or indirectly connected with industry. For example, health workers, nurses, teachers, policemen, people working in the markets and shops, entertainers, lawyers, architects, street cleaners, bankers, legal advisors. So all these people are very important, as although they do not actually make anything, but they are very important in making our society work smoothly. Without them, it is not possible to make our life easy and comfortable. So the scope of tertiary industry is very wide. The service industries include office work, transport, communication, law enforcement, legal professions, hospitality, catering, entertainment, shops, boutiques, businesses, tourism, and even homemaking. The work of housewives and mother is also a service industry. Students, although the scope of service industry is very wide and transport is a part of service industries, but here we will discuss transport in great detail because it is very essential in the movement of oil, industrial and agriculture products. Students, transport is different types of vehicles or transportation are used to carry raw material and goods from one place to another within a country, like trucks, tanker trucks, cargo or goods trains, trailers. So there are different vehicles that we use to carry the goods, but all generally these goods are in small quantity and it is comfortable or it is economical to use these transports or these vehicles. But if we want to send goods or raw material in bulk or in large quantity from one country to another country, these transports or these vehicles are not suitable for that. So the cheapest way of getting or sending goods by that are in bulk or in large quantity, like mineral ores, coal, grain, similarly machinery or vehicles. So the cheapest way of sending these goods from one side of the world to the other is sending these goods by sea. And for this purpose, different seaborne transport is used, that and there are different kinds of ships that carried the goods through sea. The main types of ships for long distance voyage are oil tankers, container ships, bulk or carriers. So these are the ships that are used to carry the industrial products or agricultural products or raw materials in a larger quantity in bulk from one country to other country, as this is the cheapest and most suitable way of getting these things. So students, there are also some smaller ships that carry mixed load over shorter distances. So sea route has always been a very good way of transporting things. It is cheap, economical, and you can carry
the goods in larger quantities. So let's see what are the seaborne transport that is used to carry the goods. The first one is the tankers. Students, a tanker is a ship designed to transport or store liquids or gas in bulk. Major type of tank ship include the oil tanker, the chemical tanker and the gas carrier. Students, these tankers are huge floating tanks that are powered by engines, and they are usually used for transporting oil. These are not the ordinary oil tankers which you see on your city road. ऑर्डिनरी जो टैंकर्स आपको अपनी रोड्स पर ऑयल कैरी करते हुए नज़र आएंगे, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम, क्योंकि दे आर वेरी ह्यूज इन साइज़, दे आर वेरी बिग, एंड जो वर्कर्स हैं दे आर सो ह्यूज दैट द वर्कर्स यूज स्कूटर टू मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू वॉक फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द टैंकर. सो दे आर वेरी ह्यूज, और इनका जो साइज़ है डैट इज़ ऑलमोस्ट 450 मीटर्स लॉन्ग एंड 68 मीटर वाइड्स. स्टूडेंट्स, 450 मीटर मीन्स हाफ अ किलोमीटर लॉन्ग. तकरीबन ये हाफ किलोमीटर जो है वो बड़े होते हैं, 450 मीटर लॉन्ग. इफ़ यू सी दी ऑर्डिनरी जो हमारे ऑयल टैंकर्स हैं, उनकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट डैट इज़ अबाउट 13 मीटर्स, और दीज आर 450 मीटर्स. यू कैन इमेजिन कि अगर हम जो आम ऑयल टैंकर्स हैं, ऑर्डिनरी ऑयल टैंकर्स हैं, अगर हम उनको ऑलमोस्ट 34, 33, 34 ऑयल टैंकर्स को अगर हम एक लाइन में खड़ा करें तो जितनी लेंथ है, तो जो ऑयल टैंकर्स हैं दैट आर सी बॉर्न ट्रांसपोर्ट, उनकी लेंथ जो है वो इतनी ही होती है. सिमिलरली अगर आप इमेजिन करना चाहें कि इनकी लेंथ कितनी है, तो अगर आप 100 मीटर रेस जो है वो हमारे स्पोर्ट्स डे पे होती है, तो यू कैन इमेजिन कि हम ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में, जो उसकी वन साइड है जहाँ जिस साइड पे स्टेज है, वहाँ से आप देखें कि डैट इज़ द 100 मीटर, तो आप उसको 4.5 टाइम्स जो है वो डब कर लें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये टैंकर जो है वो होता है. एंड दैट्स द रीज़न कि जो उसका क्रू है, जो उसका जो स्टाफ है, दे ऑफन यूज़ मोटर स्कूटर्स टू गेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द डेक टू दी अदर. एंड सिमिलरली स्पीड जो है इस टैंकर की है डैट इज़ एट 25 किलोमीटर्स पर आवर, एंड इट टेक ओवर 5 किलोमीटर्स टू स्लो डाउन टू आ स्टॉप. के इसको किसी भी स्टॉप पर रुकने के लिए 5 किलोमीटर्स पहले ही जो है वो स्लो डाउन जो है वो होना पड़ता है. स्टूडेंट्स, दीज tankers are specially designed to carry the chemicals or carry the oil, and these tankers is just not वन ह्यूज टैंक. ये सिर्फ एक ही बड़ा टैंक जो है वो नहीं होता, बट अ सीरीज़ ऑफ सेपरेट वंस. इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस जो हैं, डिफरेंट लार्ज टैंक्स जो हैं, सेपरेट टैंक्स जो हैं वो बने होते हैं. और इसकी रीज़न जो है वो क्या है? टू अवॉइड द एक्सीडेंट और टू कीप द बैलेंस ऑफ द टैंकर. एज़ यू नो कि जब when we move liquid in a container, so in case of breaks or to prevent the contents spilling to and fro in storms and when decelerating, कि जब वो स्टॉर्म आता है तो ये जो कंटेंट है, जो लिक्विड उसके अंदर होता है, वो मूव करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. लाइक अगर ब्रेक्स लगती हैं तो इट इज़ द पॉसिबिलिटी कि जो वो सारा ऑयल या लिक्विड है उसका प्रेशर जो है वो उसके फ्रंट साइड पर, उसकी डेक वाली साइड पर जो है वो टैंकर की हो जाए. या अगर स्टॉर्म है समंदर में, ओशन में, उसकी वजह से जो उसका लोअर पार्ट है, जो उसका बैक पार्ट है, वो अगर थोड़ा सा नीचे हो जाता है फ्रंट पार्ट से, तो वो इट इज़ द पॉसिबिलिटी कि जो लिक्विड है वो सारा का सारा बैक साइड पर जो है वो मूव कर जाए, जिसकी वजह से जो वेट है वो अनबैलेंस जो है वो हो जाता है. सो शिफ्टिंग द वेट, जो ड्रामेटिकल शिफ्टिंग ऑफ वेट है, उसको अवॉइड करने के लिए इसमें डिफरेंट इसके सीरीज़ ऑफ सेपरेट टैंक्स जो हैं इस टैंकर्स में बनाए जाते हैं. ये यहाँ पर समटाइम्स बेफल्स आर यूज्ड. बेफल्स जो हैं दे आर द स्क्रीन्स इन अ लार्ज टैंक्स. जैसे आप थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं कि रुकावट जो है वो डाल देते हैं ताकि जो सारा का सारा लिक्विड है वो किसी एक साइड पर, किसी एक डायरेक्शन में मूव जो है वो ना कर सके. एंड दिस इज़ टू अवॉइड दी एक्सीडेंट्स, and similarly this is to keep the tanker balanced. उसको बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, so that it can move quite smoothly or travel safely and smoothly into the oceans, into the water. So क्योंकि एक्सीडेंट जो है it can, if there is not
these kind of safety measures, there are the chances of accidents such as hitting a rock and another ship, और उसकी वजह से जो है वो बहुत सा डैमेज जो है वो हो सकता है. इट कैन बी फाइनेंशियल. सिमिलरली लीकेज जो है वो ऑयल की और लिक्विड की जो हो सकती है, दैट कैन बी डेंजरस नॉट ओनली फॉर द मरीन लाइफ बट ऑल्सो फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड environment. So these are the specially designed tankers that are used to carry oil from one place to another place. और आप इसमें देखें कि इसकी जो कैपेसिटी है इसमें इट कैन कैरी 300,000 टन्स ऑफ ऑयल. इतना ऑयल जो है वो लेकर आ सकते हैं. दैट्स द रीज़न इट इज़ यूज टू कैरी द ऑयल फ्राम वन कंट्री टू अनदर. पाकिस्तान जो है उसमें वो भी इन्हीं टैंकर्स के ज़रिए जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो 1 टन है इट इज़ इक्वल टू 1000 kg. 1000 kg के जो इक्वल होता है. तो यू कैन इमेजिन कि इसमें कितना लार्ज क्वांटिटी में ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जा सकता है. और इट इज़ चीपेस्ट कि अगर आप आम से ऑर्डिनरी टैंकर पे बाय रोड, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और क्वाइट इम्पॉसिबल. अगर आप उसमें ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे ऑयल को फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग. The next one is the container ship. Students, container ships are the really floating warehouses. Warehouses mean वहाँ a place where we store the things. तो आप इसको warehouse जो है वो कह सकते हैं. It is over 400 meters long and they are designed to carry goods already packed in containers. कंटेनर्स में जो पैक गुड्स होती हैं उसको कैरी करने के लिए ये शिप्स जो हैं स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं. एंड स्टूडेंट्स, यू हैव डेफिनेटली सीन द कंटेनर्स एंड दीज आर द ह्यूज मेटल बॉक्सेस. 6 और 12 मीटर्स लॉन्ग होते हैं एंड 2.5 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर इनकी हाइट जो है वो होती है. और ऑल दीज कंटेनर्स आर सेम इन साइज़ एंड शेप. दैट्स द रीज़न कि दे कैन बी पैक्ड टुगेदर मच मोर क्लोजर दैन लूज़ गुड्स. कि जो लूज़ गुड्स हैं जो कंटेनर्स में पैक नहीं होती हैं उनकी निस्बत इनको पैक करना जो है, इनको स्टोर करना आसान होता है क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली पैक हो सकते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर कि ऑल दी कंटेनर्स आर इक्वल इन साइज़ एंड शेप. सो दे आर पैक्ड वेरी क्लोजली, वेरी टाइटली एंड देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट. और इस वजह से मैक्सिमम जो गुड्स हैं या मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं. एंड इट इज़ सेड कंटेनर शिप जो है, लार्जर कंटेनर शिप जो है, इट कैन कैरी ओवर 6,000 ऑफ दीज ह्यूज मेटल बॉक्सेस एट अ टाइम. दीज प्रोडक्ट्स जो कंटेनर्स में होती हैं, दे आर लोडेड इनटू द कंटेनर्स इन द फैक्ट्रीज एंड स्पेशल ट्रेन्स और ट्रक्स आर टेकन देम टू द पोर्ट्स वेयर दे आर लोडेड बाय स्पेशल इक्विपमेंट्स ऑन टू द शिप. एंड फर्स्ट जब कंटेनर्स वहाँ पहुँचते हैं, दे आर जो इनको फर्स्ट जो है इनको दीज कंटेनर्स आर पैक्ड बिलो डेक एंड व्हेन इट इज़ फुल ऑन द डेक इटसेल्फ. सो यू कैन सी कि टोटली द होल शिप इज़ packed with the containers, no place is left, so that maximum containers or maximum goods can be transported from one place to another places. And students, containers जो हैं nowadays most of the import and export is done through containers. It is a very common way of sending things from one part of the world to the other part because the things in containers are always safe. और goods जो हैं वो they can not be stolen. स्टीलिंग जो है वो अवॉइड की जा सकती है. सेकेंडली जो कंटेनर्स की जो गुड्स हैं, दे आर पैक्ड एंड लॉक्ड इन द फैक्ट्रीज अंडर द सुपरविजन ऑफ द पर्सन और द कंपनीज हु आर सेंडिंग दीज कंटेनर्स. सो वो अपनी उनको अंदाज़ा होता है कि हम जो गुड्स जो है वो भेज रहे हैं वो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स दे आर, सो दे कैन पैक देम अकॉर्डिंग टू द नेचर और ऑफ द गुड्स. उनकी पैकिंग जो है वो अपनी अकॉर्डिंगली कर लेते हैं. मैक्सिमम जो उसके अंदर स्पेस है उसको यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं. और सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प देम कि उनकी स्टीलिंग जो है अवॉइड हो सकती है. सेकेंडली उनको देयर इज़ वेरी लेस चांसेस ऑफ हार्म टू सफ़र फ्रॉम हार्म, लाइक सफ़र फ्रॉम डैमेज, लाइक फ्रॉम रेन, स्टीलिंग एंड अदर डैमेजेस.
सो इसमें सेफ़ गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं. सेकेंडली, व्हेन दीज कंटेनर्स आर अनलोडेड ऑन द पोर्ट, वहाँ से इनको डायरेक्टली जो है डिफरेंट रेल के ज़रिए और ट्रक्स के ज़रिए उनकी एक्चुअल डेस्टिनेशन जो है उस पर भी फौरी तौर पर जो है वो पहुँचाया जा सकता है. सो कंटेनर शिप्स जो हैं वो आजकल बहुत ही कॉमन है ट्रेड के लिए. द नेक्स्ट वन इज़ bulk carrier. Students, there are we have talked about the liquid or gases or chemicals that are carried in the tankers. Similarly, we also talked about some goods that could be uh, packed in the containers, but sometimes there are goods that are not suitable for the containers. For example, there are raw material like coal, metal ore, grains, and some other materials that cannot be stored in containers, and so that's why they are often carried in these bulk carriers. A bulk carrier is a merchant ship especially designed to transport unpacked bulk cargo such as grains, coal, or steel coils and cement in the cargo holds. Students, these are up to 350-meter long and with the engines and living quarters at the rear, with the rest of the ship a huge open space for cargo. So there are huge open spaces for cargo. आप जो ओपन चीज़ें जो हैं लेके जाना चाहते हैं, दैट बल्क में जो चीज़ें लेके जाना चाहते हैं उसके लिए देयर आर ह्यूज ओपन स्पेसेस एंड यू कैन सी इन द पिक्चर the open spaces, and it is said that many of them can hold 250,000 tons of goods. कि इनमें जो million tons of goods जो हैं वो कैरी जो है वो की जा सकती हैं, इनकी स्पेस जो है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है. So these bulk carriers are used to carry the goods in bulk such as coal, metal ore, grains, cement, etc. Students, these are the container ships, bulk carriers and the oil tankers that are used to carry different products, industrial products. Similarly, there are some other specialist ships. For example, there are refrigerated ship. They are used to carry meat and other perishable goods about the world. Perishable mean that can easily be damaged और जल्दी ख़राब जो होने वाली चीज़ें होती हैं उनको, जैसे like vegetables and so many other things that needs to be refrigerated. तो there are refrigerated ships जो meat और such kind of perishable goods, foods जो हैं वो from one part of the to another part जो है वो लेकर जाती हैं. So these are because of these ships कि आप देखें कि हमारे बड़े स्टोर्स पर डिफरेंट एरियाज़ की, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो हैं चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट होकर हमारे डिफरेंट बड़े स्टोर्स पर जो है वो मौजूद होती हैं. एंड ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ दी रेफ्रिजरेटेड शिप. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टॉक अबाउट द बटर or the meat and seafood, so all these are carried with the help of refrigerated ship. Similarly, there is roll-on and roll-off ships, and these ships are used to carry cars and other vehicles which are driven under their own power into the vast hold of these ships. कि ये ड्राइव करके ये कार्स जो हैं ये चूँकि कार्स कैन बी ड्राइवन, सो ये इसमें कार्स जो हैं ये इनके जो लोअर पार्ट है, जो इस व्हीकल्स का जो है वास्ट जो एरिया है वहाँ पर ये खड़ी कर दी जाती हैं, एंड दे कैरी दीज व्हीकल्स एंड द कार्स. So these are the seaborne transport, industrial transportation that is used to carry industrial and agriculture goods. They are very useful. They are the cheapest way of sending goods by sea, and they can carry a larger and a bulky one material from one place to another place. Students, shipping in Pakistan. Let's see what is the scope of shipping in Pakistan. Pakistan National Shipping Corporation was established in September 1963, and Pakistan has a reasonably modern fleet of 15 vessels with a deadweight tonnage of 2,061,836. And students, you must remember that at the time of independence there were only 3 main ships that was given to Pakistan, but now Pakistan is progressing in this field, and Pakistan is lucky to have seaport as Pakistan on the
south of Pakistan is Arabian Sea, so there are some very famous ports of Pakistan like Karachi port, Port Qasim, and similarly the Gwadar port, that is the one of the largest port of the world, and it is under process. और ये जो ports हैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो होती है, एंड पाकिस्तान नॉट ओनली ट्रेड फॉर इटसेल्फ बट ऑल्सो प्रोवाइड्स सी पोर्ट, और जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, और जो गल्फ़ सिटीज़ हैं उनको भी जो है ये एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रेड. एंड जो गवादर पोर्ट है, इट इज़ ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ चाइना. सी पैक जो है वो इसीलिए किया जा रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ द ट्रेड. सो पाकिस्तान इज़ वेरी लकी टू हैव द सी पोर्ट्स, क्योंकि सी पोर्ट्स जो हैं किसी भी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ट्रेड के लिए. ऑन द पेज ऑफ 51 यू कैन सी देयर इज़ कंटेनर टर्मिनल इन द कराची पोर्ट, जहाँ पे कंटेनर्स जो हैं वो डायरेक्टली अनलोड जो हैं वो किए जा सकते हैं. सो पाकिस्तान इज़ वेरी लकी, क्योंकि सी पोर्ट्स जो हैं वो किसी भी मुल्क की ट्रेड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. So that's all for today, students. And here is your home task. You have to read the topic thoroughly from your book and solve the worksheet and write in your neat copy. Students, we have completed our chapter industry. So you must learn all the questions and write the answers neatly in your copies. Thank you. Take care. Allah Hafiz.